टूल लाइफ की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो टोटल कटिंग टाइम एक्यूमुलेटेड हो रहा है बिफोर द टूल फेलियर्स का, वो हमारा टर्म कहलाता है टूल लाइफ. देयर इज अ नो एग्जैक्ट या सिंपल डेफिनेशन ऑफ द टूल लाइफ. हावेवर इन जनरल जो टूल लाइफ होता है वो कैन बी डिफाइन कर सकते हैं एज अ टूल यूजफुल लाइफ which has been expanded when it can no longer produce satisfactory parts. इसमें बेसिकली जो टू मोस्ट कॉमनली हम लोग क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं मेजरिंग द टूल्स के लिए, पहला ये होता है कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूल व्हेन इट सीजेस टू कट. दूसरा, अ फिक्स साइज ऑफ द वियर लैंड ऑन द टूल फ्लैंक on carbide or ceramic tools. Where crater wear is almost absent, tool life is taken as corresponding to 0.038 to या 0.076 mm wear land on the flank for finishing respectively. So as discussed above, जो tool wear और hence the tool life है वो depend करती है on many factors. जो greater variation है, greater variation tool life which is cutting speed, टूल वेयर और टूल लाइफ डिपेंड्स करता है मैनी फैक्टर्स पे. और जो ग्रेटेस्ट वेरिएशन होता है टूल लाइफ का विद द कटिंग स्पीड और टूल टेम्परेचर, जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है कटिंग स्पीड के. टूल टेम्परेचर इज seldom measured or much study has been done on the effect of cutting speed on the tool life. So tool life decrease with increase V. Tool life decrease with increase V or decrease being parabolic. To draw these curves, the cutting tools are operated on the failure of cutting speed, different cutting speed. In 1907, the tailors have given the following relationship, that is Vt की power n equal to C. Vt की power n is equal to C. This formula indicated V is the cutting speed, T is the time in minute for the flank wear to reach a certain dimension, that is tool life, and the C is the constant or n is the exponent. V is the cutting speed, T is the time, C is the constant और n is the exponent, जो कि depends करता है upon the cutting condition. और if the cutting speed tool life curves as a plot on a log graph, straight lines are obtained. See this diagram. This one is the diagram for cutting speed tool life curve, जहाँ पर n जो हमारा था वो नेगेटिव इनवर्स स्लोप ऑफ द कर्व और c जो है वो इंटरसेप्ट velocity of t is equal to 1. So the results are valid only for particular test condition employed, जहाँ पर c जो हमारा कटिंग स्पीड है और टूल लाइफ ऑफ इन 1 minute. This means the cutting speed, this means the log cutting speed, this means the log tool life, this means the log life in minute. There are following criteria for n values. N values are n is equal to 0.1 to 0.15 for a high speed steel tool, 0.2 to 0.4 for carbide tools, 0.4 to 0.6 for ceramic tool, and there was a tool life also depends on the great extent on the depth of cut D and feed rate per revolution F. So the tool life also depends on the great extent of the depth of cut D or feed rate per revolution F. So assuming a logarithmic variation of C with D equation, that is formula is V t की power n d की power n is equal to C. It has been that decrease of the life with increase the speed is twice as a great exponentials increase the tool life with increased speed. So the right formula is that is traits for Vt की power n d की power n fx f की power alpha equal to C. Then what are the variables affecting the tool life? Tool life basically primarily affected by the high temperature in the thin surface layer subject to wear, और जो variable affecting the cutting temperature will also affect the tool life. और ये जो variables हैं R वर्कपीस मटेरियल है, टूल मटेरियल है, कटिंग वेरिएबल है, टूल ज्योमेट्री है और कटिंग फ्लूइड है.
ये जो अफेक्ट करता है these variables on the cutting temperature को, these are the variable affecting the